दोस्तों नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। और देखिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे दोस्त राजा मुनीब साहब। और हम आज बात करने जा रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, डॉक्टर जयशंकर। उनकी एक किताब लॉन्च हुई है पीछे 2 दिन पहले। इनफैक्ट उन्होंने बड़ी डिटेल्ड एक बातचीत की ओआरएफ के पैनल से। किताब है उनकी व्हाई इंडिया मैटर्स। व्हाई इंडिया मैटर्स में वो बात करते हैं रेलेवेंस की, भारत की आज की पॉलिटिक्स में, और साथ ही वो डिस्क्राइब करते हैं उन जो शिफ्ट्स हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के पहले से इन पिछले 10 सालों में जो आए हैं। बियॉन्ड दैट वो बड़ी खूबसूरती से जो इस किताब में डिस्कस करते हैं। हम में से किसी ने भी किताब पढ़ी नहीं है, बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, हम दोनों में से किसी ने भी किताब पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैंने बुक जरूर कर रखी है, मैंने मंगाई हुई है, अभी पहुंची नहीं है मुझ तक। मैंने ऑनलाइन बुक कर रखा है इसको, और अभी आई नहीं है। तो मगर हम बात कर रहे हैं उनके उस इंटरव्यू के बेसिस पर, जो उन्होंने एक डिटेल्ड घंटे भर का इंटरव्यू दिया है एएनआई को, स्मिता प्रकाश को। उस पर हम चर्चा करेंगे। और एक किस्म का आप इसको मान सकते हैं कि हम ये प्री बुक डिस्कशन कर रहे हैं। एक बार किताब हाथ में आ जाएगी तो हम फिर वो पोस्ट बुक डिस्कशन करेंगे, जो किताब के बेसिस पे होगा, जिसमें हम उसके एक-एक चैप्टर्स पे जाकर बात कर पाएँगे। मगर बड़ी खूबसूरत एक चीज़ जो उसमें सुनने में आई, जो उस इंटरव्यू के दौरान, वो थी कि जहाँ पर वो रामायण को एक सूत्रधार की तरह से यूज़ करते हैं कि कैसे रामायण के वेरियस अटेम्प्ट्स को, वेरियस कैरेक्टर्स को वो डिप्लोमेसी से जोड़कर देखते हैं, व्हिच वाज़ काइंड ऑफ fascinating to me। कि वो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो अक्सर महाभारत से रिलेटेड रहता है कि रियल टाइम जो पॉलिटिक्स है वो महाभारत में हो रही होती है। मगर यहाँ इस केस में डॉक्टर जयशंकर का कहना है कि उनसे किसी ने एक बार ये बात कही थी कि भई आप महाभारत को तो सारे जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रामायण के बारे में इस तरह से सोचा है? तो उनका ये कहना था कि उन्होंने इसलिए इसमें फिर रामायण के को पिकअप किया है, उससे डिप्लोमेसी को डिराइव किया है रामायण के ज़रिए। तो उस पर एक जिसको हम प्री बुक एनालिसिस कह रहे हैं, तो वो प्री बुक एनालिसिस हमारे साथ करेंगे आज राजा मुनीब भाई। मुनीब भाई, आप कैसे देखते हैं सारी चीज़ को? पहले तो अस्सलाम नमस्कार वालेकुम आपको। आपको। हाँ, नमस्कार और वेलकम आपको। जी, बताएँ। जी, मैं इसको कैसे देखता हूँ, आई थिंक जो किताब का नाम है ना, दैट टेल्स यू कि वेयर दे आर ड्राइंग देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम, व्हाई भारत मैटर्स, राइट। या तो हुँ, इंडिया की जो एक फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी, जिसको मोस्टली ग्लोबली लोग कहते थे कि इट्स अ वेरी रिएक्टिव काइंड ऑफ अ पॉलिसी। इट हुँ, वाज नॉन अलाइन्ड, सॉफ्ट पावर, रिएक्टिव टू इवेंट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड देन टेकिंग अ शेप and हुँ, deciding what to do. या But last 10 years, that reactive thing has gone to that, being a proactive thing. So हुँ, instead of reacting to narratives and, framing a response based on कि क्या हो रहा है और कैसे होगा, I think जो हुँ, अब जो foreign policy है, that is more like what our interests are. पहले से हम कैसे इसको proactively इसको हम कैसे pursue कर सकते हैं, अपनी interest कैसे pursue कर सकते हैं, how we go about it. जी, हुँ, And also one thing more, it also tells you about the new resurging, assertive, confident India, या driving its, policy out of its own core values. Now, core values from Indian civilization, चाहे वो महाभारत है, चाहे वो रामायण है, जयशंकर जी ने रामायण की बात की, तो दिस एंड इवन चाणक्य नीति भी कहीं ना कहीं जो है बड़ा फेमस है। इवन इन इंडिया में भी लोग कहते हैं कि चाणक्य नीति से चलाते हैं एंड ऑल दैट। तो आई थिंक जो हुँ, आपके कोर वैल्यूज वो आप कहीं ना कहीं अपने कोर सिविलाइजेशनल टेक्स्ट से और एग्जाम्पल से जो है इवेंट से आप उसको ड्रॉ करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं। सो दैट दैट रियली हुँ, डिफाइंस व्हाट भारत इज, व्हाट इंडिया इज। एंड आई थिंक हुँ, it's a very beautiful way of putting it across ki how Bharat matters and what Bharat matters, why Bharat इन matters. करंट वर्ल्ड, या बिल्कुल, That बिल्कुल। is what it is all about. ओके। जहां तक हम बात करते हैं पिछले 10 साल की, अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं, तो आई हुँ, थिंक लास्ट 10 years में देयर हैज बीन अ लॉट व्हिच हैज चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ हुँ, अप्रोच, towards the foreign policy, towards the vision of India on the global level. हुँ, अगर हुँ, आपको याद होगा, द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो फर्स्ट टर्म है, ही हुँ, मेड वेरी सिग्निफिकेंट ट्रिप्स अब्रॉड। आपने याद होगा, वो टीवी पे बड़े इमेजेस आते थे, अफ्रीका जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। ही मेड अराउंड 92 ट्रिप्स, जिसमें कुछ रिपीटेड ट्रिप्स भी थे। इन हिज फर्स्ट 5 years ऑफ
his governance. That tells you that how important it was for him to lay the foundation of the Indian foreign policy, and how he wants India to be a part of the global world, and how he wants India to drive its own narrative within the global world. Example in case is, uh, अगर आप देखेंगे कि most of the foreign countries and foreign trips जो होते हैं, they are more about recognizing the issues countries have within each other and trying to iron those issues out, right? But मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जितना मैंने स्टडी किया अभी तक की the way why we have been so successful, and I will give you examples of success in terms of foreign policy of India. I think what he really focused in those 5 years was not about the differences we had within one nation or the another nation. Obviously, that was also a part of the issue. But I think he focused more of what the common interest between the two nations are. What are the strengths of the two nations which can be played together, और जिसपे commonality build की जाए. Now that is very significant क्योंकि उससे होता क्या है कि that helps you building trust. The moment you find commonality on working grounds, the moment you find similarities and you go on your similarities, that helps you build a lot of trust with with other countries where you have previously would have had problems, or previously your diplomacy would not be working that well. But that is what he really went about it. And if you remember, when abrogation of Article 370 happened, right, the world firmly stood behind India majority. And that was a huge shift. The biggest shift came from the OIC countries themselves, UAE and Saudi. It was very difficult to garner support, and traditionally they have always backed Pakistan and stood behind Pakistan, and given statements on behalf of Kashmir. Even they were very positive of this development, and they also just brushed it aside and said that it's India's internal matter, and so I think that also is a testimony to its own fact that how well he was able to carve out during that first 5 years. और जो उन्होंने वो पहले 5 साल में किया, that got carried over to next 5 years. Right? You saw India becoming more active globally. Like अगर हम बात करेंगे diplomacy is not only about hard power. It is also the soft power. It is also your culture. It is also your value. Right? It is presenting yourself in that way. And I think what India has been able to do is India has been able to portray itself more as a friendly, helping nation to everyone who is in need, rather than a bully who would say, ऐसे करो, ऐसे करो. What is more prevalent of the Western countries, the diplomacy of the Western countries. So I think India का approach बड़ा different रहा. And if you remember COVID-19 के time पे भी, the diplomacy was at its best. The way they went about giving vaccines, helping out nations, and the important thing, it is not only the big nations which matter, which have the economy. It was those small nations who really didn't have that economy and that clout. So going out and helping them out of the way, and taking care of them. So that showed an attitude of, I would say, a very mature, very robust kind of a democracy, and a robust kind of a power, which is more towards welfareism than the typical global rifts and global lobbying which is played. So I think वो भी जो एक था, वो बहुत बड़ा factor था उसमें. क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, he's also talked about foreign policy vis-a-vis the domestic policy, right? Politics of it. And yes, somewhere it is driven by that. But there is a change, and I would say that's a paradigm change. UPA का अगर हम देखेंगे, UPA की foreign policy was subservient to the local politics of it. ठीक है. Example in case जो श्रीलंका में अगर आपको याद होगा 2012-2013 मनमोहन सिंह ने वो कॉमनवेल्थ में नहीं गए. He didn't go there. They boycotted the Commonwealth. And it got terminated. बिल्कुल. Only because they wanted that their political assertion was that it might please the Tamil local parties and will get some votes in Tamil Nadu. Now, politically, domestically, it might have made sense. But globally, then what are you portraying yourself? You're not portraying yourself as a regional power. Forget about a global power, or having a very strong narrative. That tells you that how different you are within yourself and how narrow your own interests are.
बिल्कुल, when it comes to global politics. So I think, बिल्कुल, and that essentially caused Sri Lanka, to further away from us, and it took us a lot of time till they got bankrupt, and then we had to bring them back into the fold, बिल्कुल। and now the हुँ, relations are better. And China हाँ, took advantage of it. It was a problem for us. बिल्कुल, But I think बिल्कुल। that kind of foreign policy doesn't exist. Case in point, the Israel-Hamas war, right? हुँ, Traditionally, India हुँ, has always stood behind Palestine, always. या And even this बिल्कुल, time also, they were very clear that yes, a two-state issue is required. But at the same time, they were very, very clear on counterterrorism and on terrorism and stood very strongly behind Israel. So that tells you बिल्कुल, that what the priorities are. So if you look at the global narrative India is trying to build, it is one on counterterrorism as well. It wants to be seen as a हुँ। strong ally against counterterrorism and no tolerance towards terrorism and strongly एक denouncing एक पॉइंट terrorism. मुझे आपकी आपने कश्मीर का ज़िक्र किया है राजा भाई और उस कश्मीर एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल की बात की आपने। उससे मुझे एक और चीज़ याद आई जब आपने ओआईसी का ज़िक्र किया, वो ये कि जहाँ पर इस गवर्नमेंट की एक बड़ी मेजर पॉलिसी शिफ्ट जो मुझे बहुत फ़ैसिनेट भी करती है, वो ये कि मिडल ईस्ट की जो उनकी पॉलिसी रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई में इंदिरा गांधी के टाइम से लेकर आज तक हमारे यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर गया ही नहीं था। मोदी जी वाज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंदिरा गांधी टू विज़िट यूएई। और आप ये देखिए कि इन 9 सालों में, 10 सालों में ये तमाम रिलेशनशिप मिडल ईस्ट से हमारी आज 9 साल के अंदर-अंदर में व्हिच इज़ इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी बेसिकली 9 इयर्स आर नथिंग। बट आप ये देखिए कि इट सीम्स लाइक वी वर नेवर अगेंस्ट एनीबॉडी इन मिडल ईस्ट एंड इट्स ऑल गोइंग हंकी डोरी। मतलब इतना खूबसूरती से ये रिलेशनशिप डेवलप हुई है कि आज आप देखिए कि जैसा कि आपने एग्जांपल भी दिया कि कोई ओआईसी में से बोलने के लिए नहीं आया एब्रोगेशन 370 में। तो क्या आप क्या कहते हैं उसका मिडल ईस्ट की जो पॉलिसी रही है? देखिए मिडिल ईस्ट की वही मैंने कहा ना कि अगर आप यूपीए को कंपेयर करेंगे दे वर वेरी रिएक्टिव एंड सबसर्विएंट टू देयर लोकल, वेरी सेंसिटिव टू द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ इट. On हुँ, the other side, Modi ji is not. Modi ji drives the global narrative and हुँ, उसको फिर लोकल पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करके उसका अप्रूवल इस तरह लाते हैं कि लोग कहते हैं कि इट्स ब्रिलियंट, they बिल्कुल, approve of what he does. बिल्कुल। और the biggest part of this is the UAE relationship is the booming trade and या with the UAE. It had a huge potential which was never even looked into. मैं या आपको बताता हूँ 1995 तक around 95-2000 period में हमारा जो trade value था with the UAE, it was हुँ, around $1.1 billion. इमेजिन व्हिच इज़ नथिंग कुछ भी नहीं हो। In the last हुँ, 9 years, as of 2023, the trade value between India and UAE is $84.5 billion upwards, इमेजिन इमेजिन almost हाँ, crossing $85 billion, right? So that is the हुँ, potential, and that is what runs the economy of the country. That is what runs the foreign policy of the country. That is what helps you build ties with the country and make stronger relationships. So he एंड इट्स did ओनली recognize. इंक्रीजिंग या बिल्कुल। हाँ, सो हुँ, एक स्वॉट एनालिसिस अगर करता है कोई कि मेरी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं, किसके साथ स्ट्रेंथ्स मैच होती हैं, कहाँ वीकनेसेस मैच होती बिल्कुल, हैं, राइट? बिल्कुल। And even हुँ, if you look at it, foreign policy, if you remember, even towards Pakistan, he was never hostile when he came नो in, right? बस अगर आपको हुँ, याद हुँ, होगा, he actually went out of the way and said कि let's come on, let's start it. But एक चीज है मोदी जी में, and what I like about him, हुँ, he's very his foreign policy is driven not only by values but also by messaging. He या has this hand of friendship extended to everybody. He's बिल्कुल। willing to work with everybody. But if somebody is not willing to shake that hand or is going to stab you in the back, then he has that हुँ, kind of a very tight fist. Case in point, Pakistan. Case in हुँ, point, हुँ, China. अगर आपको याद बिल्कुल, होगा वो समिट जो हुआ था इंडिया बिल्कुल में विद सी, उसके बाद झूले पर बैठना गुजरात में। हुँ, हुँ, the Gujarat summit was basically a step towards India-China new relationship, or sorting out issues by dialogue and all that. So jahan issue हुँ, hai, he firmly believes that we can sit down, talk, and iron those issues out. Obviously, with हाँ, interest of paramount to India. But if हुँ, you हुँ, then essentially think that ये weakness है, like traditionally हुँ, जो Pakistani have always thought कि नहीं अगर Indian Prime Minister approach कर रहा है तो this is a sign of weakness, then I think he has shown them that he's more and enough strong than you perceive his as weakness. It is more of his strength than weakness. एक और उसमें And बड़ी today खूबसूरत that चीज़ नोटिस की होगी
हाँ, इसी इंटरव्यू में राजा भाई उन्होंने एक और खूबसूरत बात कही थी, जहाँ पे वो ज़िक्र करते हैं कि भई जो टेररिज़्म के ज़रिए फ़ोर्स करना था भारत को, बार-बार पाकिस्तान फ़ोर्स करता था कि हम टॉकिंग टेबल पर आ जाएँ, टेबल पर आएँ, नेगोशिएट करें, बात करें, और इस बात को पुश करने के लिए, अपने इस एजेंडा को पुश करने के लिए वो टेररिज़्म का यूज़ करता था, कि टेररिज़्म इतना ज़्यादा कर दो हिंदुस्तान में कि भारत आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पर वो बड़ी खूबसूरती से बात एक्सप्लेन करते हैं कि हमने वो पॉलिसी पर रिएक्ट करना बंद कर दिया है। हमने वो पॉलिसी इतना इग्नोर किया है और उस पर नहीं फॉलो किया है कि वो पॉलिसी ही इर्रेलेवेंट हो गई है। इनफैक्ट आपको याद हो, मैंने आपसे शेयर किया था वो पाकिस्तानी एक पत्रकार हैं कामरान यूसुफ, जिन्होंने इसके ऊपर एक व्लॉग भी किया था। मुझे लगता है वो बड़ा रेलेवेंट बनता है इस कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज़ उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट को बिल्कुल उल्टा समझ लिया था। मतलब वो, मुझे समझ नहीं आया कि वो किसी का नैरेटिव फ्रेम करना चाह रहे थे, या वो किसी बहुत सरकारी स्कूल में कहीं अंग्रेजी पढ़े थे, जो उनको अंग्रेजी समझ में ही नहीं आई कि उन्होंने बोला क्या। तो मगर दोनों चीजें, एक तो जी, नैरेटिव फ्रेम करना और अंग्रेजी में भी ये थोड़े वीक होते हैं, इनकी पैदल है ग्रास्प ऑफ मामला। स्ट्रांग नहीं है। हुँ, जी। तो तो बिल्कुल सही। जी, हुँ, देखिए, पाकिस्तान का जो टेररिज्म यूज करना था ना, जयशंकर जी ने जो कहा, एंड ही इज वेरी राइट। मैं उसमें हुँ, कुछ ऐड करूंगा। एक्चुअली पाकिस्तान यूज डबल टेररिज्म पॉलिसी। नाउ हाँ, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि हुँ, पहले तो टेररिज्म करो इंडिया को टेबल पे लाने के लिए, ठीक है, और वही, उसके बाद जब वही, आपकी टॉप्स आर नॉट वर्किंग और आपने कोई बात वो मनवानी हो या उनको वीक करना, तो आप और टेररिज्म उसके ऊपर करो कि हुँ, यू डू मोर टेररिज्म टू टेल देम कि यू हैव टू एग्री टू अस, और ये हशर होगा, ऐसे मतलब हम करेंगे ये या ये करेंगे। होगा, ये बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। तो आई थिंक हुँ, that was a blackmail of Pakistanis which went on for a very very long time, डील and हो I गई। think he actually called their bluff out. So we called it one of the most biggest bluff of Pakistan. Pakistan used to use this as a bluff. और या bluff की गेम में भी, गेम ऑफ कार्ड्स में भी, अगर आप सेम पत्ते बार बार फेंकोगे तो योर बिल्कुल। ब्लफ विल गेट कॉट आउट, राइट? आप एक बार खेल हुँ, सकते हो, दो बार खेल सकते हो, मगर अगर आपने हर बार वही पत्ता और वही स्ट्रैटेजी यूज करनी है, तो देन ये भी कॉट, somebody will call you बिल्कुल, out. And बिल्कुल, वो पकड़ी जाएगी। essentially they went ahead and they called them out and in Balakot, and the Pakistanis had no answer, and हुँ, it's over for them. हुँ, Now the problem is हुँ। कि अब हम क्या करें? अब उनको ये लगता है कि किसी को ले आएंगे या किसी एक्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को ले आएंगे दोबारा से, तो वो बात करेगा। That is not going to happen. The ball has मुझे लगता moved, है the bus has सिनेरियो moved. भी बदल गया है, पहले के सिनेरियो में शायद हो भी सकता हो, लेकिन अब जो सिनेरियो है और जिस किस्म की जियोपॉलिटिक्स हमारे आस-पास खेली जा रही है, जिस किस्म की रीजनल पॉलिटिक्स है, मुझे नहीं लगता कि अब उसमें कोई कि वो उनको ये लगेगा कि भई प्यार-मोहब्बत से इमोशनलिज़्म में कोई बात बन जाएगी। तो वो मुझे लगता है वो इट्स टू लेट इन द डे, द बस हैज़ बीन मिस्ड। The bus has been missed and Pakistanis have dug a trap for themselves जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते. If you remember बिल्कुल। application of Article 370 के बाद ना 2019 में इमरान खान was हुँ, very open कि नहीं, जब तक application of Article 370 आप वापस नहीं लाओगे और ये नहीं करोगे, हम बातचीत नहीं करेंगे, और उन्हें वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रेटरिक बनाया जो अभी तक चल रहा है, राइट? Now जी, essentially बिल्कुल। if you say हाँ हम बातचीत करने को तैयार हैं, और you brush aside the Article 370 issue, then you are essentially saying कि okay, we are done with Kashmir, we are very happy खत्म। what is हुँ, happening. हुँ, Their हुँ। whole politics will go down the drain. वो 70 साल का उनका नैरेटिव ही खत्म हो जाए, तो उन्होंने अपने लिए लेकिन वो ऐसे ही इसमें गड्ढा खोद दिया, इसमें तो बाहर नहीं आ सकते। लेकिन राजू भाई, इसमें एक और बात उठती है कि वहां पर एक डिबेट ये भी चल रही है पाकिस्तान में कि जिस तरह से भारत ने इसको अपने इनकॉर्पोरेट कर लिया, अपने अंदर कश्मीर को ले लिया है, वो ऐसा ही जो हम इनका जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, वो ये गिलगिट बाल्टिस्तान का जो इलाका है, उसको वो इसी तरह से अपने अंदर लेने की बात करते हैं। हाउ 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 डू यू लुक एट दैट? See, they tried to do that last year. अगर आप देखेंगे they made changes. उनके इवन पोस्ट ऑफिस के नाम भी बदलने शुरू हो गए थे, राइट? They tried doing that, but वहां से रेजिस्टेंस बहुत आया जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. We had a lot of protest in POJK last year. We had lot of protest in Gilgit Baltistan last year. और फिर ऑब्वियसली अच्छा। जो पाकिस्तान की अपनी क्राइसिस है, टुवर्ड्स one region, towards their eastern border with Afghanistan. तो आई डोंट थिंक दैट दे आर इन अ पोजीशन कि अब वो एक तो बलोच ऑलरेडी इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना वो बिल्कुल, मसला बहुत बड़ा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल। का मसला उन पे पड़ा हुआ है। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट थिंग दे वांट कि अब ये तो उन्होंने वो अभी उसको सॉर्ट ऑफ अंडर द रैप्स रखा है,
but yes, the Pakistani plan is of the same. We will merge it completely and we'll take away the identity of POJK. I don't think that is going to happen because the people of POJK will never let that happen. And then essentially Pakistan is looking at a very, troubled times in that region for itself as well. So मुझे नहीं मुझे लगता ये कि लगता पाकिस्तान है, पॉसिबल बिल्कुल। है। एक्चुअली आपको याद हो राजा भाई, जब ये कोविड शुरू हुआ था अराउंड उस टाइम पर इन्होंने एक और बड़ा पॉलिसी ब्लंडर, मुझे तो पॉलिसी का ब्लंडर ही लगता है, इन्होंने किया था कि इन्होंने पीओजेके में जो टैक्सेशन रिलीफ दिया जाता था कि अगर आप फैक्ट्री लगाते हैं तो आपको एक्साइज में या टैक्सेशन में वहाँ रिलीफ मिला करता था। वो सारा का सारा रिलीफ इन्होंने वापस ले लिया था और उसको लेकर वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स थे या जो लोग उन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी थी, वो सारी इंडस्ट्री वहाँ बंद हो गई थी। तो दैट वाज अनदर थिंग व्हिच काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वैसी ही मैसेजिंग थी जैसी एक ज़माने में इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को दी थी कि हाँ, they जी। have they have this thing of shooting themselves in the foot. The Pakistanis will always point the gun at their feet or they will shoot themselves. ठीक है? तो वही So I don't see कि उसमें कोई change था, and that was very stupid of them to do, right? It doesn't work, and that also triggered a lot of anxieties in that region. So इसलिए मुझे लगता है कि keeping Pakistan, it's as the foreign minister aptly said, it's a very small part of what India perceives as, and we're not going to give Pakistan that much leeway. I don't think he's talking about Pakistan in his book. Also, he has not given them much weightage, and neither should we when it comes to this, right? But I think what is important is how in coming years India is going to shape up its narrative when it comes to China. I think that is where the test of real foreign policy is. क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो चल रहा है अभी, what is happening vis-a-vis Ukraine, Russia, and the way we have dealt with Russia and Ukraine, I think it is commendable the way we have done it. Looking at our interest first and then somebody else's interest, right? At the same time, making the, देखिए एक चीज होता है कि you do what you want to do for your own good, not caring about what the world says about you. That is how people say in their personal lives that how you should go. One thing is doing what is good for you and making sure that the world understands and cares enough for that decision as well. And I think that is a very, very important decision, which India has been successfully able to do. They have the ties with Russia are very, very close at one point, but at the same time they're as the Americans and as the our foreign office also said, with Americans from a working relationship, they're coming at as a partnership relationship. So that tells you that there is maturity, there is understanding, and good amount of trust between two countries on issues. Because US is a big partner of India. The trade value is around 200 billion. It's huge. So it's an opportunity as well. And I think that framing and that building of relationship is something very, very important. Same is the case with Israel and Hamas war in the Middle East. If you see essentially, how we are going about it, and we have stood behind Israel, but at the same time in UN May, we went and we talked about Palestine as well, right? So I think and the Israelis never took offense to it because they understood where we are coming from. They understood our priorities. They also understood value-based solutions we are looking at, which is essentially of creating more larger peace than conflicts in the world, right? Indian foreign policy is more about creating peace in the region than creating conflicts in the region. So I think that is something which is very, very good. Also, I think the value given to our own citizens abroad, we have not seen that kind of, वो बहुत बड़ी बात है. अगर आपको याद होगा 2014 के बाद वो ISIS का क्राइसिस हुआ था जहां वो 31 nurses were taken. It was very difficult, with dealing with an organization like that, and that too in Syria, Iraq at that time. It was, I would say, it was a Herculean task. It was a fantastic task which is not spoken enough in our circles, in our media circles. बिल्कुल. Actually वो बड़ा critical time था. बिल्कुल. I remember that.
So among all the rescue operations we have carried out for our civilians, for our citizens, I will rate that one of the highest and one of the most difficult ones, बिल्कुल, right? बिल्कुल। उसके Good that बाद you अगर remind me, very good that you remind of हाँ that because वो मेरे दिमाग से निकला हुआ था, but it was very very critical. I think it was old contacts of डवाल साहब जो हमारे काम आए थे उस वक्त। So yeah, but then वो बहुत it was इट वाज बिल्कुल, वेरी बिल्कुल। क्रिटिकल। और या उसके बाद फिर अगर आप कोविड के टाइम पे देखेंगे, द वे वी इवैक्यूएटेड पीपल, हमने उनको, या फिर जब सूडान में जब हुआ, इवन हुँ, ड्यूरिंग सूडान में हुआ, सूडान के वक्त हमने किया जब टर्की इराक पे earthquake आया, if we had citizens there, we took care of them. So I think that messaging that every Indian life values या is something which has also stuck, and also elevated the respect of India as a country in the eyes of the world. That is also बिल्कुल, important to say. एक सर्टेन डिग्री Even ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और आता है एग्जर्शन में, बिल्कुल। हाँ, और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी ये इजराइल गाजा वॉर में there was हुँ, this Kashmiri lady who was essentially married to some Egyptian in Egypt but was stuck in Gaza. She still holds an Indian passport, right? हाँ, 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 We even evacuated her from Gaza to Egypt. वाओ! ग्रेट। That tells you about the priority of an Indian being an Indian abroad. बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ एक्चुअली 80s में जब हम लोग जर्मनी में पढ़ते थे, तो ये मैं आपको बताऊँ एक्चुअली एम्बेसी में फ़ोन करने में डर लगता था। बिकॉज़ इफ यू आई रिमेंबर अ पर्टिकुलर केस एक लेडी का I don't want to name her, on this platform at this stage because, she's around. But, she was on a postdoc in a university, Germany में, और she was being bothered by that professor. And when she turned to embassy for support, guess what embassy would have said? आप उनके साथ जरा डिनर पे चले जाइए and see what he has to say and what his problems are with you, and then sort it out among yourself with him. Can you beat it? This is how you treat your citizen? That is what I'm saying. From there to now evacuating people from Gaza Yeah. is where the value of an Indian citizen in eyes of the Indian government is completely, elevated, and where they hold it. It's very important for them. Yeah. So I think Yeah. that these are the things that are driving the foreign policy, and I think it's a very robust foreign policy. And honestly, मुझे नहीं लगता कि any other country has achieved what India has been able to achieve in last 10 years in terms of global presence. Global presence to always Thai India, but assertive diplomacy, and that building of vishwamitra kind of narrative which is successful and powerful. अब आप ये देखिए ना कि इंडिया कल्चरली अगर आप देखेंगे the cultural assimilation of India in terms of yoga around the world, how easily it has been taken, how positively it has been taken to an extent that even South Diwali, बिल्कुल, how Diwali is being celebrated across globe now, बिल्कुल। तो I think Saudis are now celebrating International Yoga Day, which was not even imagined. I know people in Pakistan who are continuously practicing it. In fact, हमारे जो दोस्त हैं एक थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई नैब के चक्कर में। पाकिस्तान में एक जो ऑर्गेनाइजेशन है नैब, बड़ी टेररिस्ट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो उसमें वो हमारे एक दोस्त थे वहाँ पे, ब्रिगेडियर असद मुनीर। तो उन्होंने उनको फेक फजूल में तंग करने के लिए उनको नोटिस भेज दिया गया था एक। तो ही कमिटेड सुसाइड इंस्टेड ऑफ गेटिंग कॉट, एंड देन वो जो ड्रामा करते थे हथकड़ी डालकर। तो ही वाज सच अ प्राउड मैन, अ वंडरफुल वंडरफुल ह्यूमन बीइंग दैट आई मेट इन पाकिस्तान, एब्सोल्युटली जेम। तो वो उनकी डॉटर हैं, तो शी इज इनटू योगा। So I know it's absolutely आप मैं क्या कहूँ, yoga on a personal level, आप कहीं भी करो, कैसे भी करो, कोई इशू नहीं। One is to give recognition to it as a country, and that too coming from somebody which is very staunch Islamic country like Saudi Arabia, right? Very true, very true. In fact, do you know something? I know certain people who are into the so-called agencies of Pakistan. They regularly practice yoga because it helps them. Can you beat it? तो वही है, एक पॉजिटिव इमेज इंडिया की बिल्ड हुई है, एंड आई थिंक the way we have used
our strengths, our cultural strengths to make bonds and get India recognized. I think 10 साल में मुझे नहीं लगता कि और कोई country ऐसी है जिसका rise in foreign policy or rise in foreign power and recognition इतनी जल्दी बढ़ा हो जितना इंडिया का. So with that note, I would say that I'm really waiting for the book to go and read it completely, and then we can discuss it chapter wise. Bilkul. Let's wait for that book, and once we have it, we'll have a thorough program on the book itself, है ना? Thank you so much, राय भाई. आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और we both are actually waiting for the book. As soon as it arrives, we'll go about it again. Thank you so much. Thank you,